Hello everyone, welcome to my channel Manikansan Study Mantra MSM. It is a continuation video of chapter 1, that is the computer system. Nowadays I am providing online classes for Louis International Academy, Bokakhat. Now, in previous classes we have discussed about the computer system, what are the different types of categories of computers, or you may say, depending upon size, how can we categorize all the computers over there. And after that, the components, hardware components, then software components, what are the different types of hardware components that we have introduced in our modern market, which are available in our modern market. Now another thing is what we have discussed about the software programs, all the software programs that we have, we normally use in our computer systems, any computer system. Now we will discuss about the computer language. What? Computer language. Now, without a language, is it possible to communicate with another person or to some other object? It is not possible, right? So there must be a language which can understand by both the speaker as well as the listener. Yes or no? Language needs us to convey our feelings with the others such that, but remember one thing, the language must be understandable for both. Yes or no? But normally in case of systems, computer systems, computer is not a human, computer is a machine, and we are human, so there might be a problem of languages. So what happened, the scientists have discovered, you may tell discovered or invent, two different languages such that we can also communicate with the computers and computers can also communicate with us, right? And also what I will say, okay, whenever I get remembered I will tell you. Now there are two basic languages as far as for computer. One very low level languages, another is high level languages. Low level languages and high level languages, two different languages are there. Number one, low level language. Number two, high level language. These two are only computer languages. Now what this one includes two languages. One, I have discussed about this in previous class, right? Assembly language. What? Assembly language. I have already discussed this. Assembly language. And the another one is machine or machine language. I have discussed about these two type of languages in our previous class, right? In previous class we have discussed about assembly language and machine language. Now what is high level language? Yes or no? So you may have some, you must want to, you might be want to know what is high level language. High level language are those languages which are bit a level higher
than these type of language, these two languages. Now, assembly language was the first ever languages that has been introduced to a computer system. That means it was nearly 1950 when assembly language was introduced. Now, in assembly language, what was there? There some combination of or collection of some letters, alphabets, English alphabets में लिखा जाता था ये. Using in English alphabets, this assembly language is being formed or developed. Machine language, as I have already told you, that machine language includes all the binary numbers. That means how many binary numbers are there? Only two digits are there, 1 and 0, and I can use these digits in any arrangement or any format. Yes or no? Suppose I need to show something like this. It has some value. I don't want to go in details. What does it mean? Actually, it means u2 square 4 5. The value of this is actually 5 in decimal system. How? Please don't ask me, because it is a lengthier another concept. You to understand this, you have to go at least higher secondary second year. Understood? Or in engineering you will understand these things, electronics basically. So how we got 5, that means this is in decimal system. हमने वो जो हम जो 5 बोलते हैं ना, 5, I have 5 rupees, I have 5 pence, these things, this is written in the form of 101 in binary system. This is in binary system. I can assure you that this is in binary system and this is in decimal system. But computer system doesn't understand decimal systems. Understood? And but in computer, binary systems is understandable. So it in this format is called machine language. This format is called machine language, and this format is not a machine language. But this format is related to which format? This language, this format is used to this format belongs to machine language. This is okay. Decimal, we can use decimal numbers in machine in writing programs in high level languages. Okay. And what is the difference between high level language and low level language? See, high level assembly language and high level language. In assembly language, it is the very beginning programming language actually. It is the first programming language that has been used for utilizing in our what? Computer systems. Here only English alphabets are used. Okay, here only English alphabets are used, no decimal numbers used. But as the development or evolution of assembly language has been is being processed, after a few years this high level language could be introduced, where a programmer, that means the person who writes program, can include these decimal numbers into our programs. Understood? That means program जब हम एक program लिखेंगे, अब high level languages हम सीख रहे हैं, हम जानते हैं, अब high level language को यूज़ करते हैं normally. तो अब क्या करते हैं हम? इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो यूज़ करके जो वर्ड बना सकते हैं, हम उस वर्ड के साथ साथ हम इस डेसिमल नंबर्स को भी हम वहाँ पे लिख सकते हैं, जोड़ते भी हैं हम. लेकिन पहले के ज़माने में असेंबली लैंग्वेज जब था, उसमें सिर्फ इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखा जा सकता था, इसको बिल्कुल नहीं. और उससे भी पहले था मशीन लैंग्वेज. एक्चुअली इनिशियली एट द वेरी बिगिनिंग people have to write their programs in machine language. That means machine language क्या है? यही तो है ना, कुछ भी समझाना हो. That means any instruction you have to put inside the computer system, you must follow this
फॉर्मेट ओनली, 1010 में ही सब कुछ समझाना पड़ेगा, तो इसमें बहुत दिक्कत हो जाएगा ना. यू हैव टू कन्वर्ट एवरी कैरेक्टर, दैट मीन्स ए बी सी डी को हमें कहाँ कन्वर्ट करना होगा, बाइनरी. और एक तो एडवांटेज डिसएडवांटेज ये है, बाइनरी में जब लिखोगे, देखो ये 5 बहुत आसानी से हमने लिख दिया, डेसिमल 5 एकदम ऐसे एक अक्षर में, एक लेटर में एक नंबर में लिख दिया. लेकिन वही 5 समझाने के लिए बाइनरी में कितना डिजिट लगा, हमें 3 डिजिट लगा, देखा. तो दैट मीन्स दैट मच अ स्मॉल नंबर we needed this much of length. That means these each of them are known as number of bits. 3 bits required to show or to represent one digit in decimal. Understood? So think about the letters in alphabets, how many digits it could have taken to कन्वर्ट इट इनटू व्हाट, बाइनरी फॉर्मेट. और वो लिखना तो बहुत ही मुश्किल साबित होता होगा ना. तो that was too far difficult to write a program in machine language. Understood? Now, so to make it simple for programmers, people some kind of evolution has been developed in case of programmings. Okay, and as a evolution, presently we are using high level languages. Before that, we have used assembly language where decimals were not introduced, only English alphabets were used. Then before that, machine language is only available to write any program also. Nowadays what happened, we are dealing with this and this, yes or no. Now see, a machine cannot understand these languages, these two languages machine directly cannot understand. So we need some mediator, or we need something which or who can convert these high level or assembly language into machine language. And for that we have learned yesterday about compilers, interpreters, assemblers, yes or no. We have learned yesterday about that. So those are the things which can convert a high level language or assembly language into machine language, such that the machine can understand whatever actually the programmer wants the system of computer to instruct. बुझी पाइছে ना কথাটা? Understood? I hope you understood. So this is the basic thing regarding languages. Now, if a programmer, that means the person who is writing a program, uses machine language, that program will directly, if we are introducing that program to our system, the operation or the function of that program will be faster in comparison to a program that has been written in high level or assembly languages, because उसको मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट करना ही नहीं होगा, किसी और में करना होगा क्या. ही डजंट नीड टू कन्वर्ट मशीन लैंग्वेज इनटू सम अदर लैंग्वेज. उसमें टाइम लगेगा कि नहीं. बट इफ ए प्रोग्रामर राइट्स हिज language, write his program in high level language or assembly language, the system must have to compile it or convert it into understandable language by the machine, that is called machine language. It needs a few seconds, extra seconds it needs, yes or no. So these programs will decrease or minimize the speed of the program. But we have no other choice, because we cannot write this much of things. We cannot write a program in machine language. So it is it will be become more difficult for a programmer to write a program in machine language. So instead of doing that, he just compromise with the speed of the runtime speed of the that particular program. So he have to compromise with it. But anyhow, this is easier for programmer. It is very difficult for programmer. That means machine language is difficult for programmer to write a program.
but it is easier for a machine and it is difficult for a machine, vice versa. Understood? एक किसी एक के लिए अगर अच्छा, ये प्रोग्रामर के लिए अच्छा है, समझ मतलब आसान है, लेकिन कंप्यूटर के लिए आसान नहीं है. वो कंप्यूटर के लिए आसान है लेकिन प्रोग्रामर के लिए ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो डेफिनेटली हु विल इंस्ट्रक्ट द machine or computer? Definitely human. User will instruct. So user is familiar with this type of language, so he will use this one. And machine has to, machine रखा है क्यों है? क्योंकि वो कुछ कर सके, जो यूज़र को अच्छा लगे वही करेगा. तो यही तो है यूज़र को अच्छा लगने वाला लैंग्वेज. तो यूज़र लिखेगा इसमें और मशीन क्या करेगा, उसको कंपाइल करेगा या कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में और वो उसके बाद काम करेगा. आई होप यू अंडरस्टूड नाउ this is the basic difference between programming high level languages and low level languages. Now ये जो हाई लेवल लैंग्वेजेस का जो इवोल्यूशन होना स्टार्ट हो गया वो आफ्टर 1950 से, मिड ऑफ 1950 से स्टार्ट हो गया. 1950 के मतलब उस डिकेड का मिड वे में से ये इवोल्यूशन स्टार्ट होना चालू हो गया. नाउ assembly language, I hope, let me read the paragraphs. Okay, here, a computer language also called a programming language. We all know that a computer language is also known as what? Programming language, because in computers we put what? Programs for giving instructions, right? So they will be known as programming languages. Now, programming language is a language used to write and develop software programs for the computer. Yes or no? Now, computer languages can be divided into or classified into two basic categories, and those are low level language and high level language. Already I have discussed here. Now, low level languages. Low level languages are of two types. They are machine language and assembly language. Understood? These are machine language and assembly language. I have discussed here. Now, low level languages are machine independent. That is very important point. Low level languages are machine dependent. See, you cannot write whatever you want, because the program that the language that you are using in a particular machine must be that one which only that program or that which is understandable for that particular machine. Understood? कुछ समझ में आया बात? तुम जब लो लेवल लैंग्वेज में कुछ प्रोग्राम बना रहे हो, उस प्रोग्रामर को ध्यान में रखना होगा कि जो भी लैंग्वेजेस उस मशीन के लिए समझ में आता है, जो भी लैंग्वेजेस उस मशीन को समझ में आता है, उसी को हम यूज़ कर सकते हैं, कुछ और नहीं यूज़ कर सकते. दैट मीन्स इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द मशीन. दैट मीन्स दिस लो लेवल लैंग्वेजेस, both the low level languages are totally dependent on that particular machine. That is, it is called machine dependent. Very important point. Okay, for true false type of questions it is very important. So low level languages are machine dependent but high level languages are not machine dependent. That means they are high level languages are machine independent, because ये तो बस क्या है, user friendly है ना. High level languages are always user friendly. That means programmer friendly, you can say, also say. That means programmer इसमें लिख के उसे मज़ा आता है तो वो इसमें लिखेगा, और इसमें लिखने के बाद क्या होगा, उसको तो वैसे भी मशीन लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तो उस हिसाब से हम कंपाइलर लगा देंगे. समझ में आया अभी? उस हिसाब से हम कंपाइलर लगाएंगे. वैसे भी तो इसको डायरेक्टली समझ में मशीन को आएगा ही नहीं. किसी भी कंप्यूटर को ले लो, कोई भी कंप्यूटर को तुम्हें तुम्हारा हाई लेवल लैंग्वेज समझ में आएगा ही नहीं. देखो, हाई लेवल लैंग्वेजेस कई टाइप का होता है. जैसे मान लो सी, मैं वैसे भी आने वाला था इसमें, C++, जावा और भी बहुत सारे हैं. वो सब लैंग्वेजेस किसको पता होता है? प्रोग्रामर को पता होता है. और उसी हिसाब से हम कंपाइलर फिट करेंगे, लगाएंगे. उसी हिसाब से हम कंपाइलर लगाएंगे जो इस हाई लेवल लैंग्वेजेस को मशीन लेवल लैंग्वेजेस में, मतलब उस कंप्यूटर को जैसा चाहिए वैसा
फॉर्मेट में वो कंपाइल करके देगा, कन्वर्ट करके देगा। समझ में आया अभी बात? तो तुम ये जिसमें भी क्यों ना लिखो, क्या फ़र्क पड़ेगा, बस कंपाइलर उस टाइप का लगा दो। या तो तुम अगर लिख रहे हो मशीन लैंग्वेज, ये जो हाई लेवल लैंग्वेज लिख रहे हो सी प्रोग्रामिंग में, और तुम यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हो, लगा रहे हो कंपाइलर कौन सा, जावा का, तब काम नहीं करेगा। समझ में आया अभी? तो सी का लिख रहे हो, सी में तुम सी लैंग्वेजेस में लिख रहे हो तुम्हारा प्रोग्राम, तो अगर कंपाइलर वहाँ पे क्या लगा देंगे, टर्बो सी या फिर कोड ब्लॉकर्स, ऐसा कुछ लगा देंगे जो आसानी से तुम्हारा सी लैंग्वेजेस, जो सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम था उसको कहाँ कन्वर्ट कर देगा, वो मशीन लेवल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर देगा, ताकि जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, जो कन्वर्टेड होके आएगा मशीन लैंग्वेज, वो तो कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर आसानी से रीड कर पाएगा, है कि नहीं? तो इट इज़ टोटली independent. High level languages are totally independent, but assembly languages and machine languages are low level languages, but they are machine dependent. Sorry. अब ये असेंबली लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्योंकि वहाँ पे 1010 का चक्कर है, that thing you have to remember that every machine may have some kind of different codes. Assembly language का क्या है? Assembly language, see, assembly language is normally used in case of practical use is what, in case of माइक्रो प्रोसेसर। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर में हम क्या यूज़ करते हैं, असेंबली लैंग्वेज यूज़ करते हैं। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर का कई सारा नाम होता है, मतलब कई सारा पार्ट होता है, 8085, 8051, बाद में पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा। वो सब तो एक मतलब नाम है, जैसे आपका सिम कार्ड का नंबर, हर एक लोगों का नंबर अलग अलग होता है ना। मेरा सिम कार्ड का नंबर अलग है, आपका सिम कार्ड का नंबर अलग होगा, किसी आपके दोस्त का सिम कार्ड का नंबर अलग होगा। दैट मीन्स this assembly language, why am I using here more Hindi? I could have told it in described it in English also, but I am using here Hindi such that you can understand very well. Understood? So यहाँ पे क्या है, assembly language जो है वो हर एक हार्डवेयर के लिए, हार्डवेयर मतलब हार्डवेयर, हर एक सिस्टम के लिए अलग, मतलब मशीन के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे 8051 के लिए एक अलग सा असेंबली लैंग्वेज बनाना पड़ता है, वो कुछ अलग समझता है। ठीक वैसे 8085 नाम का एक क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर हमने पढ़ा है, जब हम इंजीनियरिंग किए थे तब हमने पढ़े थे। तो वो सब हम बस एज ए एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसको ध्यान मतलब याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपके अपना जनरल नॉलेज अच्छा रहे बस, और इसको ये जो हम पढ़ रहे हैं इसका फ्यूचर यूज़ के बारे में पता चले, ताकि ऐसा ना लगे कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हमें तो ये चाहिए ही नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोगों को चाहिए होगा, अगर आप डेफिनेटली हायर स्टडीज़ करोगे तब चाहिए होगा। और अगर अभी से आप लोगों को ये सब चीज़ें मालूम होगा, तब जाके आपको बहुत ही आसान महसूस होगा, बहुत ही इतना अच्छा लगेगा कि अरे हम तो ये सब पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, तो अभी तो ये क्या है, हमारे लिए बहुत आसान होगा, मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो इसी वजह से हमने इसको डिस्कशन में लिया है, ताकि हमारा पता है हमें टाइम का भी ध्यान रखना है, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा बहुत बोल के इसको कंप्लीट करना चाहेंगे। तो क्या है, जो अलग अलग टाइप का हार्डवेयर के लिए हमें क्या चाहिए, असेंबली लैंग्वेज भी अलग अलग तरीके का, थोड़ा बहुत इधर उधर का हो जाता है, मतलब समझ में आया? तो अब शायद आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट है, और हाई लेवल लैंग्वेजेस मशीन इंडिपेंडेंट है, ये कभी नहीं करेगा। और अभी अब हम इसका जो हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, और उसके बाद हमारा ये जो टॉपिक है वो हम ख़त्म, ये जो चैप्टर है हम इसको ख़त्म करेंगे। ओके, कोई बात नहीं। हाई लेवल लैंग्वेजेस, हाउ मेनी, देयर आर लॉट्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस, यू विल नो। से एकदम पहला जो द फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेजेस दैट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड to a computer system was what? Fortran. What? Very important. ये लिखो, FORTRAN, Fortran. What? Fortran, इसको कैसे पढ़ा जाता है मैं बता देता हूँ। Fortran, एक्चुअली ये दो अलग अलग वर्ड था जिसको जोड़ के बनाया गया है। देखो, दिस फॉर का मतलब है फॉर्मूला,
I hope you all know about it. Formula, what it is? It is formulae or formula. Okay. और इसका मतलब क्या है? ट्रांसलेटर, ट्रांसलेट, फॉर्मूला, ट्रांसलेटर मतलब क्या है? ट्रांसलेट करना है. फॉर्मूला, फॉर्मूला कहाँ रहता है? फॉर्मूला तो इस ऐसे डेसिमल में या फिर लैंग्वेजेस में होता है ना, उसको हम या फिर ऐसा माना जाए कोई बड़ा बड़ा फॉर्मूला, मतलब ऐसा भयंकर भयंकर फॉर्मूला है, मैथमेटिक्स में हो या साइंस में हो, उसको एक हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखने के लिए प्रोग्रामर को उसको कभी क्या करना पड़ता था? पहले के ज़माने में उसको कन्वर्ट करना पड़ता था. तो इन दोनों में से, इन दोनों को जोड़ के ये वाला आ गया यहाँ से, और ये ट्रान यहाँ से आ गया, यहाँ से इन दोनों को जोड़ के एक फोर्ट्रान नाम का एक लैंग्वेज बना दिया. समझ में आया? तो ये रिलेटेड टू व्हाट? फॉर्मूला बेस्ड. सो फोर्ट्रान याद तो रहेगा आपको, बहुत आसान बना दिया हमने. और एक ऐसा है कोबोल, COBOL. इट इज सेकेंड, it is the oldest language. Fortran was the oldest programming language, but COBOL is the second oldest language. That means इसके बाद कौन आया? COBOL नाम का एक हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप किया गया. और इसका मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन. CO मतलब, CO का मतलब है कॉमन. B मतलब क्या है? बिजनेस. क्या है? बिजनेस, बिजनेस, कॉमन बिजनेस. O मतलब क्या है? B के बाद जो O है वो ओरिएंटेड, ओरिएंटेड, ओरिएंटेड. और एल का मतलब क्या है? लैंग्वेज है. सो कोबल का मतलब एकदम आसानी से याद रह जाएगा. CO, पहला CO जो है उसको हम क्या रखेंगे? कॉमन. सबके पास है कॉमन. B का मतलब है बिजनेस. O का मतलब क्या है? ओरिएंटेड. L का मतलब लैंग्वेज. कोबोल पढ़ने में मजा आता है. कोबोल पहला वाला फोर्ट्रान, दूसरा वाला कोबोल. एक और भी है, वो है एल्गोल. क्या है? एल्गोल. एल्गोल मतलब क्या है? एल्गोरिथम लैंग्वेज. एल्गो का एल्गोरिथम का एल्गो आ गया और लैंग्वेज का एल आ गया. सो एल्गोरिथम लैंग्वेज. एल्गोरिथम, आई होप यू हैव गॉट द मीनिंग ऑफ एल्गोरिथम. अगर नहीं मिला तो बाद में तो मिल ही जाएगा, कोई इतना समझाने वाला इतना भी कुछ है नहीं. क्योंकि एल्गोरिथम ये होता है कि कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले जो भी आपके दिमाग में आता है, क्या ये कैसे कैसे करना है, वो स्टेप्स, वही स्टेप्स हम प्रोग्राम लिखेंगे कैसे, उसको बोला जाता है एल्गोरिथम. तो वो वाला एक लैंग्वेज में लिख के, जो भी लैंग्वेज यूज़ करता है उसके लिए. ये भी बहुत पुराना लैंग्वेज है, अभी ये सब इतना यूज़ होता नहीं है. अभी ये जो कोबोल है ये किसके लिए रिलेटेड है? ये कॉमन बिजनेसेस के लिए रिलेटेड है. ये तो बिजनेसेस के रिलेटेड है, तो इसको कोबोल ही बोला जाएगा, इसको कोबोल. सो फोर्ट्रान, कोबोल, एल्गोल, दीज आर द ओल्डेस्ट हाई लेवल लैंग्वेजेस. नाउएडेज क्या यूज कर रहे हैं हम? आजकल क्या यूज कर रहे हैं? नाउएडेज वी आर यूजिंग C लैंग्वेजेस, C++ लैंग्वेजेस, जावा, बेसिक, BASIC, बेसिक, विजुअल बेसिक, .NET, ऐसा बहुत कुछ हम लैंग्वेजेस अभी फ़िलहाल यूज़ कर रहे हैं अपने क्या कहते हैं इसको, हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर. समझ में आया? तो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड ड्यूरिंग द लास्ट सेशन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, एंड दिस इज द concluding video of chapter number 1, and after this we will discuss the question answers regarding the chapter and all the tricky terms, all tricky terms that you need to memorize, or abbreviations and all you have to, we will go through it. So thank you for watching me and watching my videos, and please subscribe my channel if you still not subscribed it. And I have given my effort, and if you really like my effort, and if you think that yes, this person is doing something for me or us, so you just share my videos as far as possible, as much as possible, wherever. All Instagram, all social media pages you can use for the sharing purpose. So please share my channel, share my videos. Thank you for watching me. I will
stop the video here. Till then, uh, till the next video, you please keep your take care of yourself and be safe at home. Thank you.